Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and this is our YouTube session for you to help you practice for your upcoming banking exams. And these today we will be solving some high level questions that come in your English section, and mostly these questions are seen in the mains exams of your bank PO majorly, sometimes in clerk as well, and also in exams of regulatory bodies like RBI, NABARD. You can see such difficult questions. Now always it's not necessary that the paper the entire paper will be tough. The paper is not set like this, right? A few sections of the paper can be difficult. Like if your exam has 30 questions of English, then maybe 5 to 10 questions are extremely difficult and rest are moderate to easy. Okay, so with these classes, with particularly today's session, you will be able to know firstly that what are the how are the difficulties introduced in a question and how to tackle them, right? And once you know the pattern which makes the question difficult, and also once you have seen some different patterns, then also you will be able to solve the questions that you face. All right. So friends, let's start. So this is the English section in particular, and today we will be solving high level questions. Now here I've put some sentence improvement questions and also I have an RC. RC is your reading comprehension, right? So what makes a particular question difficult? Firstly, let's see that how is a question, how is the difficulty level of a question decided. Firstly, what decides the difficulty level is the kind of language that the question uses. Okay, so it could be the vocabulary is difficult, so you are not able to understand, or maybe the grammar rule is as such that it is very minutely the mistake has been introduced, so that grammar rule also makes the difference. Also, one major component that decides the difficulty level of one question is what? Its options. Now this is one major portion that decides. It's the major deciding factor that decides how difficult is one question. Now if the options are confusing, you tend to make mistakes. Okay, so just take care of this thing. If you get some confusing options, then it is quite difficult to reach to the correct answer. Also, when the options have combinations, right? So suppose there is a question, okay, and then this question has certain options, internal options, right? And then these are the main option 1, 2, okay, and it says both A and B, right? Here A, C and D, right? If these are the options 3, 4 and 5, if the options are like this, then also you are students tend to make mistakes. It makes reaching to the correct answer quite difficult. So this also you have to keep in mind. And if we particularly like this, I'm talking about all the kind of questions apart from RC. RC is your what? Reading comprehension. Now what happens in reading comprehension is, in your reading comprehension, what happens is, what makes a reading comprehension difficult is firstly some terms, some terms that are in news and we are not aware of it. So these are some GA terms that make the question difficult. Sometimes if the article is based on technology and we are not aware of the term, say cracked version of a software. Suppose we don't know what is a cracked version of a software and the article revolves around it, then we may not be able to understand much of it. Right, so we should know some basic. If suppose for example the article is on demographic dividend,
right? Then also, if we don't know what is a demographic dividend, then our thoughts get very limited and we are only able to decipher what has been, with our limited knowledge, what has been given in the passage, right? So our usage of general awareness terms makes a reading comprehension difficult, and if it is not a current affair based reading comprehension, or it is something which is if I'm an agriculture student and if I get a question which is based on economy, then also I should be able to decipher what has been asked, what is being said in the question, right? So similarly, if GA terms are as such that we are not able to understand, then also the passage becomes difficult, and with the use of different or difficult vocabulary. If we know what is demographic dividend, but if the vocabulary used throughout the passage, okay, suppose a word cogent has been used. So when we don't know the meaning of cogent, we won't be able to understand what has been said. If the word descent has been used, right, if we don't know what is the meaning of descent, we will not be able to solve such questions, right? Or be able to understand the meaning of the passage. So vocabulary also makes one reading comprehension difficult. So today we will study 10 questions of this regular patterns which are difficult, and some questions of reading comprehension. So you will read the comprehension and then you will try to understand it, and then we will solve the questions based on it. So let's start, friends. So yeah, this is our Zero Se PO series. Now this is to help you start your preparation from scratch. If you have missed any of the sessions, then you can watch it from the playlist on our channel and continue to watch these series now, so that 1 hour in a day at least you have your practice session fixed, right? So make sure that you are practicing along with us. All right, now let's move to the question. Now these are the questions based on correct word usage, right? We call it correct word usage, okay, or somewhere you will find it as simply word usage. So this is also very, very important, okay, because of two reasons. Firstly, it is very frequent. We have been seeing these questions many times in lot of exams. So these are coming very frequently, and this is one type that does not require grammar. No grammar. You won't need much of grammar to solve these questions. You only need vocabulary. So if your vocabulary is in place but your grammar is not, right? Sometimes students ask us in class that, ma'am, what do I do? My grammar is not good and I have only 10 days left, just joined the course. What do I do? Then we advise that you always have to try and practice solving correct word usage, word swapping, several lists I've given to those students, and those questions those students will be solving. All right, so now just try solving this question on your own. So I hope this the directions here are understandable and you know what is to be done here. Firstly, I'll tell you if you could not make out from the directions. It says that one word has been given, right? Overlook has been given, and you have to see in these 4 sentences that are given to us, that where the usage of overlook is correct and where it is incorrect, okay? And you have to choose the option where it has been used correctly, okay? So when we read this, overlook has many meanings, right? So we should be aware of those meanings, of the word that has been asked. What are the meanings of overlook? Firstly, overlook means to ignore, right? We say that mothers or parents overlook the mistakes of their children. Okay, so they ignore the mistakes of their children, okay? So they don't see those things. So one meaning is ignore, and the second meaning is the vantage point. Okay, that means
when we say, we say sometimes the balcony overlooks the gardens. Okay, so means the balcony gives a very good look of the gardens. When one person stands on the balcony, then the gardens look really beautiful from there, right? Or give the entire look of the gardens. Okay, so this is a vantage point, a good area from where you can see everything, right? So the first paper, when we read the first sentence, it says the first paper gives a great overlook of where the minerals were found, right? So overlook means a rough idea, a vantage point, a clear look. So this is the correct usage, right? Now second one says pet insurance is probably one cost most pet owners overlook but should consider the most. Here overlook means ignore. Okay, so this is also correct. Yes, so first is correct, second is correct. Let's move to the options. Here it says 1, 2. Here it says, sorry about this. Here it says 1 and 2, 1, 2, and here 2, 4. This cannot be our option, and all are correct. This can also be our option. So we have narrowed down our options to 4. All right. Now, third one says Sachin Tendulkar is confident India has the depth and balance in their side to overlook the semi-finals of the T20 World Cup, but he lists death overs as critical to their performance. So we had seen that the meaning of overlook is ignore, right? But here ignore is not making sense, right? Definitely vantage point is not making sense because it is not some physical area or some some idea, rough idea that they want to have. It is overlook here is not fitting, and even ignore is not making sense here, because here it says when the semi-finals of T20 are being talked about, no one will like to ignore it, right? And when they are talking about having depth and balance on their side, they want things to work in their favor, right? So they will not overlook. This is the incorrect usage, right? So overlook is incorrect here. If we read this, has a depth and balance in their side to dash the semi-finals. It may be to reach the semi-finals or to win the semi-finals, like this. Okay, so overlook is the incorrect usage here. It does not convey the meaning as per the context, right? So the fourth one says the neighboring hot tub boasts a similarly spectacular overlook. Okay, so boast a spectacular overlook means a great view, right? So this is also correct. So 1, 2 and 4 are correct. That is our option D. Okay, so this is how we reach to our answers. All right, now similarly the next one here, compact. Now what is the meaning of compact? Firstly, compact means what? Compact means something that is small or compressed, right? Compact also means that make a powder, the compact powder. And there is one more meaning of the word compact which you may or may not know, and that is agreement. Okay, so compact has 3 meanings: small or compressed, powder and agreement. So this one, when we read the sentences, it says the folder inserter solution is designed with a compact footprint to fit perfectly into any work environment and offers so and so. So yeah, compact means small or compressed. Okay, so compressed footprint. Yes, this is correct. So first is correct. Where do we have option 1? We don't have it in D. Okay, so we will discard. So we will discard D. This cannot be our answer. Now it says a compact is easily your simplest and most effective makeup item to manage oily skin and to give you a glowing skin in no time. So yes, this is also correct. So 1 and 2 both are right. Okay, this is the powder. Okay, now for a third one says home remedies can help you compact dandruff during the winters. So we don't want to compress the dandruff. No, we want to combat or fight the dandruff, right? So third is incorrect, and
our fourth one says, some have suggested that Alaska is too unique and joining a compact is an affront to our sovereignty, right? So this is also correct because it means agreement. So 1, 2 and 4 are right. Okay, moving on to the next one. Solve this. This is easy. So again friends, I hope you're able to solve this one on your own. Now encounter means, it has two meanings. It is an unpleasant meeting, someone, when we meet someone suddenly. So that is an encounter, and something is to face someone, right? To face someone. Okay, sudden unpleasant meet. Okay. So this is a noun and to face someone is a verb, right? Someone or something. Okay, so it says this man narrowly escaped an encounter, that is meet, an unpleasant meet with an alligator in Florida. So this is correct, right? Here it says every entrepreneur will encounter this situation, that is face this situation. So this is also correct. This is the verb form. Now here it says the army said among the two militants killed in Bomai village in Sopore last night, one was encountering as the top commander. So encountering is not correct here. Even though students may feel that, okay, this is right maybe. No, it should be enacting. Was enacting as the top commander of the Jaish militant group in North Kashmir. So third is incorrect. Okay, so only 1 and 2, option B is the correct answer, and I hope you all were able to reach to this on your own, right? So option B is the correct answer here, right? Now moving ahead, critical. Now friends, take a note of this thing, that these questions, they may look, that they are easy. You may be able to solve it when you are doing it along with a teacher, a guide, but in the exam also, the mental status is different there. We are in a different state, so we should be able to solve these questions there also. And always make sure that if you are well equipped to have the right instincts, then your instincts will guide you, because if you feel, sometimes the
one thing that kills us or something that is detrimental in these type of questions, by these type I mean those having combinations as the options, right? Like these, the most detrimental thing is जो हमारे against जाता है, that is self doubt. Okay, if we think that okay maybe sentence को ऐसे लिखा जाता होगा, but I don't know, probably my English is not good, I don't know the language that well, so maybe this is right, I don't know about it. तो ऐसा situation जो है that is self doubt, और उसमें आपको आप गलत आंसर मार्क कर देते हो ऐसे सेल्फ डाउट में. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट देयर इज नो डाउट अबाउट कि आप किस तरह से अगर आपकी नॉलेज पूरी है. कभी होता है कि हमें पता ही नहीं है और तभी भी हम कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं लग रहा तो नहीं होगा, वो तो इन दैट केस यू आर नॉट वेल इक्विप्ड टू हैव द राइट इंस्टिंक्ट्स. ओके, सो यू शुड बी वेल इक्विप्ड टू हैव द राइट इंस्टिंक्ट्स, और उसके बाद आपका सेल्फ डाउट तब नहीं करना है आपको. ठीक है. सो नाउ क्रिटिकल पे अगर हम आए, इट सेज, इसका मीनिंग क्या होता है? क्रिटिकल का मीनिंग होता है एक तो इम्पॉर्टेंट. ओके, एक मीनिंग होता है सिवियर, सिवियरली इल जैसे बोलते हैं एंड ऑल दैट. सो सिवियर. और एक मीनिंग क्रिटिकल का क्या होता है? लॉट ऑफ क्वेश्चंस और लॉट ऑफ एनालाइजिंग. ओके, लाइक फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, right? Film critics, they do a lot of analyzing behind a certain show और इस तरह से. So ये तीन तरह की meanings होते हैं. Now let's see. The first one says the mother was shifted to Ramaiah Memorial Hospital for advanced treatment as she was critically injured, means severely injured. So yes, it is correct. Second one says critical remote code execution vulnerability has been discovered. आप इसको consider it as a feature. Some critical feature, okay, has been discovered in popular Cobalt Strike hacking software. So yes, this is important. Right here it says Trump is critical. Means critical here, it means fault finding. Okay, fault finding. So here we are with another meaning which I had missed. It is fault finding attitude. Okay. So critical has actually 4 meanings, and 1, 2 and 3 all are correct here. So we will see select option E here. All right. So you don't have to ignore the 5th option, whether it is all are correct or none of these. Right. So make sure that you don't ignore these options. All right. In fact, I have heard that this time in IBPS PO prelims, many of the answers were none of these. So you don't have to ignore that possibility that none of these can also be one of the answers, right? So now moving ahead, refuse. Refuse का क्या मतलब होता है? We all know refuse as deny. किसी चीज को मना करना, deny, वो हमें पता है कि refuse होता है. एक refuse होता है waste. Okay, so these are the 2 meanings of refuse. Don't get confused or don't get limited to only deny. It is a verb and waste is a noun. Okay, so people who refuse to give up on a goal. Okay, so this is deny, this is correct. We don't even have to read the entire sentence. We know that one is correct. All right, so among the refuse left behind is human waste, which doesn't decompose, so and so. Yes, so this is also correct, right? Refuse is the waste, so 2 is correct, and we will mark that also here. 2 is correct. Okay, and 3 says Amazon had previously sought without success for Ms. Khan to refuse herself from the investigation based on her past critical statements of the tech giant. So refuse is not making sense here. It should be recuse. Now recuse is what? Recuse is to exit from a case. Okay, to excuse yourself from a case. Okay, so this is generally this term is used for judges. Okay, for judges when it is used legally mostly, and it is used when the person or the judge, maybe the judge or by person I mean the other lawyer, if the lawyer feels that the judge may be biased. So to ensure unbiased
view from the judge, unbiased hearing. A biased judge or some judge which appears to have some biases is requested to recuse herself or himself as the judge of the case. Okay, so recuse is that word. So here the correct answer is only option 1 and 2 here. Okay, so this is the right answer. Now, okay, so these are sentence improvement. Here, these questions, generally we see only one part of the sentence that is highlighted. But here, when, you know, they have to make the paper difficult, they highlight two parts, right? And then you have to see the errors for or the improved part of both the phrases that have been highlighted, right? So it says here, at the hint of the disaster, 100,000 people were forced to eradicate their house. Okay, so एक बारी और अच्छे से इसको पढ़ो and see कि इसमें क्या गलती हो सकती है, which is the correct answer here. And if it is right as it is, then you will select what? Option 5. All right, no correction is required. Firstly, हम अगर देखें eradicate their house जहाँ लिख दिया, जब their बोल रहे हैं, so there would mean what? There is more than one, right? So it is plural, right? So house is singular, तो इसलिए their houses होना चाहिए था तो सही होता. So this is incorrect. So no correction required तो है ही नहीं. बाकी में से just take 30 seconds and solve, and I will then elaborate and tell you the answer after 30 seconds. Yes, so I hope you're able to reach to an answer. So let's discuss. So it says, at the hint of the disaster, 100,000 people were forced to eradicate their house. Now, eradicate means to remove, right? So, house तो eradicate नहीं कर सकते हैं. Eradicate their house is incorrect. Okay, कुछ चीज remove करना होता है तो उसको इरेडिकेट बोलते हैं. इरेडिकेट सम डिफरेंसेस या इरेडिकेट सम माइंडसेट, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? बट होम्स को क्या करना होता है? इवैक्यूएट मीन्स टू vacate. Okay, so when disaster arrives, houses are what? Houses are vacated or evacuated. All right. So यहाँ पर evacuate वाला आंसर सही होगा. Also, such a large number of people won't be made to evacuate the house just at the hint of a disaster. Okay, जब कह रहे हैं 100,000 people were forced to evacuate their homes, तो hint of the disaster पे तो नहीं होगा, height of the disaster पे होगा, है ना? जब disaster एकदम heights पे पहुंच गया तब उनको बहुत सारे लोगों को बोला गया to evacuate their homes. So the correct answer here is option 3. All right. So correct replacement is height of the disaster and evacuate their homes, option 3. आगे चलो. Those exonerated will naturally feel vindicated, but the perception of justice having been done is limited to the accused and their well-wishers. Okay. अब जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे, you will know that actually this is correct. It is not, does not contain any error. So the correct answer here is option 5. No correction required. अब ये सही क्यों है बताएं. Exonerated का क्या मीनिंग होता है? Those exonerated will naturally feel vindicated. So what is the meaning of exonerated? Anybody? मीन्स आपको अगर इफ यू हैव बीन कोई विक्टिम होता है, सॉरी कोई कल्प्रिट होता है, उन पे कोई केस चल रहा है एंड इफ दे आर प्रूव्ड नॉट टू बी द कल्प्रिट, उनको सस्पेक्ट होता है कोई, उनको प्रूव कर दिया कि ओके यू आर नॉट अ कल्प्रिट, तो आप एक्सोनरेट हो गए हो, आप फ्री हो गए हो फ्रॉम बीइंग कॉल्ड अ कल्प्रिट, राइट? सो एक्सोनरेटेड का वो मीनिंग होता है. और विंडिकेटेड का क्या मतलब होता है?
Yeah, vindicated means this is very easy. It means that they will feel clear and they will feel very nice of being free from what do you say, the blame. Okay, so exonerated means इनको free किया गया. Okay, they are no more a suspect, right? And vindicated means feel clear of something, feel free, right? But the perception of justice having been done is limited to the accused and their well-wishers. मतलब कि ये जो परसेप्शन है कि जस्टिस हुआ है वो केवल ये अक्यूज्ड जो लोग छोड़े गए हैं से केवल उनको और उनके वेल विशर्स को ही पता चलेगी इसकी इम्पोर्टेंस, जस्टिस की इम्पोर्टेंस, या उनको सिर्फ उनको लगेगा कि उनको जस्टिस मिला है, बाकियों को लगेगा कि नहीं गलत हो गया, ये लोग छूट गए. बट ऑब्वियसली अगर उनको कोर्ट ने फ्री करा है, एक्सोनरेट करा है, सो देवर जायज सी बात है कि वो कल्प्रिट नहीं रहे होंगे तभी वो फ्री हुए हैं. बट बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, केवल अक्यूज और उनके वेल विशर्स ही परसीव करते हैं कि जस्टिस हुआ है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट, इट इज मेकिंग सेंस. सो फिफ्थ इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, इट रिक्वायर्स नो करेक्शन. आगे देखिए, ये कह रहे हैं द प्लॉट्स एंड हिंड्रेंसेस was such that anyone would have been torn between blaming the parents or sympathizing for them. अब हमें पता है कि जब हम sympathize करते हैं, we sympathize with someone. Okay, so we don't sympathize for someone. This is incorrect. So no correction required. तो ऑप्शन नहीं हो सकता है. Sympathizing with हो सकता है. So let's see. यहाँ पर आगे अब जब between, when between is used, and is used, और जब between लिखा है तो क्या होगा, क्या आएगा, and आएगा. ओके, between A and B, तो और नहीं आएगा in that case. So and sympathizing with them is correct. तो जहां जहां और है वो वाले ऑप्शंस भी हमारा नहीं हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है. सीजिंग टूवर्ड्स देम, सीज करना क्या होता है, किसी को कैप्चर कर लेना या पकड़ लेना. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो मेकिंग नो सेंस. अब इसको लगा के जरा सेंटेंस पढ़ते हैं. अब फर्स्ट फ्रेज में क्या है, यहां पर कह रहे हैं the facts and circumstances were such that anyone would have been torn between blaming the parents and sympathizing with them. So मतलब लोग, कुछ ऐसे circumstances थे, कुछ ऐसे facts थे that कोई भी बहुत ही बीच में फंस जाता कि पेरेंट्स से ब्लेम करें कि उनको सिंपथाइज करें, इन सब चीजों में दो चीजों में फंस जाते. राइट, सो this is the correct answer here, option 2. right, facts and circumstances यहाँ आएगा A में, I mean फर्स्ट पार्ट में, और आगे आएगा आपका sympathizing with. ओके, और नहीं आता है, between के साथ and आएगा. ओके, आगे चलते हैं. It says it's strange that on any given day 10,000 species are being given between the world just in the ballast water of our super tankers. So this is not making any sense. तो हम अभी देखेंगे स्ट्रेंज्ड का क्या मतलब होता है, डिवाइडेड. राइट, सो डिवाइडेड इज नॉट द करेक्ट यूसेज हियर. ये डिवाइडेड होता है, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. ये बोल सकते हैं एस्टिमेटेड, अज्यूम्ड. ओके, सो it's estimated that, it is assumed that when on any given day 10,000 species are planted between the world, so it is not making any sense. It says being moved around the world just in the ballast water of our super tankers. right, so यहाँ पे देखो, जब भी हम अगर सेकेंड फ्रेज की बात करें, so between जो है it will not be used as between must separate two objects, right, between A and B, but ऐसा कुछ है नहीं. right, so इसीलिए between यहाँ पे भी नहीं आएगा. this is also incorrect. being moved around is the correct usage. right, so 10,000 species जो है they are not grown around the world in water, so this is also not correct. so the correct answer is moved around, option 1. okay, so let's move ahead. The next one says from the involvement of a new financial instrument, India is a step farther from building a vibrant market for commodities. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
क्या है, इट इज न्यू, राइट, इट हैज बीन मेंशन्ड दैट इट इज अ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. So whenever it is a new item or idea, now it is implemented or started, right, or commenced. Okay, so started या commence आएगा. So क्या है, with commencement यहाँ पर है, right, with commencement of a new financial instrument, India is a, अब आगे देखें, जब हम आगे देखेंगे, so it says something new is introduced, and it is introduced for what? It is introduced for some betterment, right? So India should be closer to and not farther from being a vibrant model, right? So इसीलिए commencement far away वाला गलत है, यहाँ पे आएगा with the introduction, right, with the introduction of a new financial instrument, India is a step closer to building a vibrant market for commodities. The correct answer here is option 4. All right, so इस तरह हम अपने आंसर्स को सॉल्व करेंगे. अब हम आ गए हैं यहाँ पर, जो कि है हमारा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, राइट. सो इट सेज, फॉर अ नेशन दैट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड. ये मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स का मतलब नहीं पता है तो भी हमें लग सकता है कि पैसेज बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं होता है. द वंस वी नो द मीनिंग ऑफ सच वर्ड्स, वी आर एबल टू सॉल्व, राइट, व्हाट हैज बीन said in the passage, we are able to understand. Now it says, for a nation that has had a significant demographic dividend, the working age population is much larger than the non-working age sections. यहाँ explain भी किया हुआ है what is demographic dividend, right? Finding productive employment for its youth was to be an imperative for India. So यहाँ बोला गया है कि फॉर अ कंट्री, जैसे कोई भी नेशन है, उसका अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो मच लार्जर है देन द नॉन वर्किंग एज सेक्शंस, तो फिर फाइंडिंग द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, यानी कि राइट काइंड ऑफ जॉब जो यूथ के लिए निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है फॉर कंट्री, राइट, लाइक दैट विच इज इंडिया. Okay, yet in the last few years unemployment has remained a major concern. Still last few years में unemployment जो है वो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत रही है इंडिया में. ऐसा कहाँ कहा गया है? लीक्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS में, जो 2018 में कहा था कि इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज हाईएस्ट, यानी कि 6.07% था 2018 में. पिछले 40 साल में, 4 डिकेड्स में 2018 में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था. अब आपको इसको इंटरप्रेट करना करेक्टली आना चाहिए कि इसमें बोला क्या गया है. यहां बोला गया है कि पिछले 40 सालों में 2018 में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था. इसका ये मतलब है और कुछ नहीं. और हम किसी भी गलत तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो सब गलत होगा. द ओनली वे इज कि आप सीधा सीधा इसको पढ़ें कि क्या बोला गया है, उसको आप हिंदी में या जो भी अपनी लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करें. इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट. सो पिछले 40 साल में 2018 में हाईएस्ट था अनएम्प्लॉयमेंट रेट. द लेटेस्ट PLFS सजेस्ट द नंबर्स नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक. इतने ज्यादा ड्रास्टिक नंबर्स नहीं है, बट ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2021 में 4.2% था और 1920 में 4.8% था, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया था 41.6% 1920 से बढ़कर 2021 में ये इतना हो गया था. ठीक है. नाउ दिस मीन्स कि 2019 में 4.8 था और 21 में 4.2 था, मतलब कि कम होता रहा है, राइट. सो आर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन डिक्रीजिंग. ओके, तो ये बात भी आप ध्यान रखें. और पिछले 2 सालों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ा है. ऑलराइट, सो यहां से हमें ये सब पता चली. अगर हम ये पूरा, हमने जो 2 पैराग्राफ पढ़े, हमें 2-3 चीजें इससे पता चली. अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट था पिछले 40 साल में 2018 में, और पिछले 3-4 सालों से आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो पिछले 2 सालों में बढ़ा है. ऑलराइट, सो आगे देखें. In terms of more widely used statistic internationally, the current weekly status of unemployment, the figure of 7.5% for all persons is 2020-2021 is still worrying, right? अब वो कह रहे हैं
कि अगर हम जो स्टैटिस्टिक इंटरनेशनली यूज होते हैं तो जो वीकली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 7.5% पर है, और वो अभी बहुत वरिंग है, 2021 का डेटा है ये. बट द PLFS डेटा डिड नॉट ब्रिंग मच चीयर टू द गवर्नमेंट डिस्पाइट द डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. अभी डेटा क्योंकि बोला गया है कि डिक्रीज तो हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में, बट बहुत ज्यादा चीयर नहीं आया है ना. व्हाट इज द रीजन कि बहुत ज्यादा चीयर नहीं आया है डिस्पाइट द डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा. नाउ दिस इज बिकॉज चीयर इसलिए नहीं आया गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरने के बावजूद, क्योंकि जो डिक्रीज है वो उससे कॉन्साइड हुआ है कि जो ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो लोअर प्रोडक्टिव एंड अनपेड जॉब्स में आई है, और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से लोग मूव कर गए हैं टुवर्ड्स द लोअर जॉब्स, राइट. सो ये क्या है, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि व्हेन यू आर नॉट फिट फॉर अ गुड जॉब, मतलब यू आर फिट फॉर अ बेटर जॉब बट आपको वो जॉब नहीं मिलती है तो आप छोटी जॉब ले लेते हैं, राइट. सो इसीलिए इट इज नॉट ब्रिंगिंग चीयर टू द गवर्नमेंट बिकॉज दिस जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो उस टाइम पर आया है कि डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट तो हुआ है, बट अब जो एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है वो लोअर जॉब्स में बढ़ा है, सैलरीड में कम हो गया है, राइट. नाउ वरींगली इंडस्ट्रियल जॉब्स हैव डिक्रीज्ड विद मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फार्म रिलेटेड जॉब्स. नाउ एक ट्रेंड शुरू हुआ था, अ ट्रेंड दैट escalated following the lockdown and has not reversed since then. तो एक ट्रेंड शुरू हुआ था लॉकडाउन के जज्बात कि लोग एग्रीकल्चर और फार्म रिलेटेड जॉब्स में चले गए थे, और अब वो ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ था अब अभी तक वो ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, लोग उसी में जाए जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल जॉब्स डिक्रीज होते जा रहे हैं. ओके, एंड इट सेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग द एजुकेटेड, यानी कि जो कि अबव सेकेंडरी एजुकेशन है, एंड द यूथ हैव ओनली डिक्लाइंड मार्जिनली. वो कह रहे हैं कि एजुकेटेड और यूथ का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो बहुत कम गिरा है. सो उसमें मतलब इतना जिस बोला गया है उसको इंटरप्रेट नहीं करा है, राइट. अब आगे बोल रहे हैं वेज रेट्स हैव कंटिन्यूड टू रिमेन लोअर फॉर दोज एम्प्लॉयड इन आइदर सैलरीड जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयड कंपेयर्ड टू द प्री पैंडेमिक पीरियड. अब वो बोल रहे हैं कि प्री पैंडेमिक पीरियड से कम है आपका जो वेज रेट्स है, जो भी सैलरी मिल रही थी वो पहले भी कम थे और अभी भी कम है एम्प्लॉयड इन आइदर सैलरीड जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है, तो चाहे वो सैलरीड जॉब्स थे कि सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो रेट्स हैं वो बहुत कम है, पहले भी कम थे, पर जो इंक्रीज हुआ है वो लॉकडाउन के बाद बहुत कम मार्जिनल इंक्रीज मिल रहा है, मार्जिनल रेज मिल रहा है. सो मोटी मोटी बात यहाँ पर है कि वेज रेट्स हैव कंटिन्यूड टू रिमेन लोअर, पहले भी लो थे अभी भी लो है. ठीक है, नाउ इट इज क्लियर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टैकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड concomitantly the quality of employment issue on a war footing. यानी कि ये साफ बात है कि गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट और साथ साथ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का इशू, ये दो इश्यूज की अनएम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट मिले और एक बेटर एम्प्लॉयमेंट मिले, ये दोनों इश्यूज गवर्नमेंट को साथ साथ टैकल करने पड़ेंगे ऑन अ वॉर फुटिंग, मीन्स वेरी अग्रेसिवली, राइट. Now, in this regard, Prime Minister Narendra Modi's announcement that the government will be recruiting 10 lakh personnel within the next 18 months, vacancies in the railways, the armed forces and GST departments, among others, should be seen as a step in the right direction. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो गवर्नमेंट है उनको जो ये रिक्रूट करेंगे 10 लाख पर्सनल विद इन नेक्स्ट 18 मंथ्स, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया. नाउ दिस रिक्रूटमेंट जो है इट शुड बी सीन एज अ, या दिस अनाउंसमेंट शुड बी सीन एज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. ऑलराइट, सो यहाँ पे बोला गया है कि जो वैकेंसीज फिल होंगी, जो अनाउंसमेंट है उससे वैकेंसीज फिल होंगी. ऑलराइट, एंड नाउ इट सेज द लेटेस्ट डेटा शोड दैट देयर वर 8.8 लाख वेकेंट जॉब्स अमंग ऑल द सेंट्रल. अब ये बता रहे हैं कि लेटेस्ट डेटा बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन पोस्ट में इतने लाख वेकेंट जॉब्स थे. ऑलराइट, now it says Mr. Modi's announcement was not about the creation of a large chunk of new jobs. Okay, तो वो कह रहे हैं मिस्टर मोदी ने जो अनाउंस करा कि हम हायरिंग करेंगे, दैट डज नॉट मीन कि वो लोग नए जॉब क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो फिल अप कर रहे हैं अपनी वैकेंसीज को. ओके, बट स्टिल द पर्सन इज सेइंग, द ऑथर इज सेइंग, बट स्टिल इट इज इन द राइट डायरेक्शन. दिस वुड बी ameliorative. Ameliorative means that it is
in the right direction. It is good in the right direction. क्योंकि the real economy जो है वो कह रहे हैं it is good in the economy so that अभी जो इतना स्ट्रेस में है तो वो अभी स्ट्रेस से निकल जाए एटलीस्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं ये क्योंकि स्ट्रेस में इसलिए है बिकॉज इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स मिसमैनेजमेंट and the effects of the pandemic in the last few years. तो वो कह रहे हैं कि जो भी even if they are announcing to fill up the vacancies, it is still a good step in the right direction. इकोनॉमी को वो स्ट्रेस से बाहर आने में हेल्प करेगा, और वो इकोनॉमी स्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है उनका वो मिसमैनेजमेंट था, और ऑल्सो पैंडेमिक के कुछ इफेक्ट्स देखने को मिले. इन दोनों ने साथ में इकोनॉमी को डुबा दिया था, बहुत स्ट्रेस में डाल दिया था. And this announcement of jobs is in the right direction to pull the economy back on track, right? Now here it says the country cannot afford to squander more years in its race to reap the benefits of its demographic dividend. कह रहे हैं कि कंट्री कांट अफोर्ड, कंट्री के पास टाइम और नहीं है कि वो वेस्ट करे अपने ईयर्स टू ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. आपका जो एज फैक्टर है, एज इज ऑन आवर साइड, तो उसका जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनके बेस्ट ऑफ बेनिफिट्स रीप करने के लिए वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट मोर ईयर्स नाउ. एंड द पुश टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज सीकिंग टू एंटर द लेबर फोर्स इवन इफ बिलेटेड. सो वट एवर, चाहे उन्होंने गवर्नमेंट चाहे पुश ही कर रही है टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज हु आर सीकिंग जॉब्स, चाहे ये डिसीजन लेट भी आ रहा है, स्टिल इट विल हेल्प ईज द मैटर्स फॉर द मीडियम टर्म. यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, बट मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट कुछ मैटर्स तो ईज होंगे ही होंगे विद दिस अनाउंसमेंट. ऑलराइट, सो अब आगे देयर आर सम क्वेश्चंस एंड नाउ दीज क्वेश्चंस विल बी, ये आपके अभी अटैच्ड आपका डॉक्यूमेंट है एक पीडीएफ, उसमें इन क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस हैं. देयर आर अराउंड 12 क्वेश्चंस हियर. इन क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस आपको अटैच्ड डॉक्यूमेंट में मिलेंगे. तो डेफिनेटली डाउनलोड दैट डॉक्यूमेंट एंड देन यू विल बी एबल टू नो दैट इफ योर आंसर इज राइट और नॉट, राइट. सो दिस इज ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडेज सेशन. अभी जो क्वेश्चंस अब आप सोचोगे मैम ने आरसी पढ़ा दिया पर क्वेश्चन आंसर्स का क्या, बिकॉज द आरसी हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू यू प्रॉपरली. एक एक सेंटेंस आपको बता दिया गया है. यू नो व्हाट द पैसेज स्टैंड्स फॉर, उसका मतलब क्या है. तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी. एंड ऑल्सो इन दी अटैच्ड डॉक्यूमेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं, आंसर है विद सोल्यूशन है कि क्यों ये वाला ऑप्शन सही है और क्यों बाकी के ऑप्शन सही नहीं है. ऑलराइट, सो फॉर दैट, नोइंग दैट, डाउनलोड द डॉक्यूमेंट और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना अंडरस्टैंडिंग को कि आपने कितना समझा है, कितने क्वेश्चंस आप ढंग से सॉल्व कर पाए हैं वो समझने के लिए. और ऑल्सो फ्रेंड्स डेफिनेटली उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना डाउनलोड कर क्योंकि उसमें हर टाइप का क्वेश्चन है. देयर इज प्रोबेबली ट्रू वाला क्वेश्चन भी है, टोन का क्वेश्चन भी है, थीम का क्वेश्चन भी है, फ्रेज के क्वेश्चंस हैं, राइट. और इस सेंटेंस को मतलब जितने टाइप के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं अपने एग्जाम में, रियल एग्जाम में, ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन दैट डॉक्यूमेंट विद द एक्सप्लेनेशंस एंड रीजंस, राइट. सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट और वहां से आप पूरा पैसेज जो है उसको एक बार पढ़कर दोबारा से पढ़ें और फिर उसको अंडरस्टैंड करें और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें. सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज डू एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं सो दैट यू ऑलवेज गेट द अपडेट्स. जो भी आपको हम वीडियो पोस्ट करते हैं फॉर योर हेल्प, उसके लिए आपको अपडेट्स मिलेंगे. एंड ऑल्सो बी श्योर कि आप बाकी सारे सेशंस भी अटेंड करें इफ यू वांट दैट आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे.